friends, welcome to shwetasstudio. आज हम बनाएंगे watermelon martini. Watermelons are in season and मेरे बहुत favorite हैं. So I thought, why not club them and make something delicious? I mean, seriously, at only 90 calories per cocktail, who wouldn't love this? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसे बनाने के लिए आपको कॉकटेल सेट की ज़रूरत नहीं है एंड वी डू नॉट नीड एनी फैंसी आइटम। इस मार्टिनी को बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो बहुत आसानी से हमारे घर में ही अवेलेबल हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल या कंटेनर ले लेंगे और फिर उसमें कुछ वाटरमेलन के क्यूब्स या पीसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने जो वाटरमेलन लिया है वो सीडलेस है, आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं जो आपके यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। मैंने इसे हार्ट शेप में कट किया है टू मेक इट लुक बिट ग्लैमरस, बट आप इसे किसी भी शेप में आई मीन नॉर्मल क्यूब शेप में भी कट कर सकते हैं बिकॉज एनीवेज हम इसे बाद में ब्लेंड करने वाले हैं। After that, add 2 to 3 slices of ginger and just a little bit of fresh mint. After that, blend. And here we have our fruit juice concentrate ready. Now, take the serving glass, or you may also use watermelon shell like I have used here. Next, let's add simple syrup that can be made using equal parts of sugar and water. Just a little bit, about 30 milliliter. For me, this is sweet enough. Add about half quantity of watermelon juice and 1 tablespoon of fresh lemon juice. Now add 60 milliliter of your favorite vodka. Here I am using Absolut. You can use flavored or plain vodka. To cut down the sweetness, add half a teaspoon of black salt and then top it up with some ice. Now pour in the remaining quantity of watermelon juice. Give it a nice stir and look at there. Perfect martini. Cheers guys. Hope you guys are having a fabulous time so far. And I really hope you enjoy this yummy cocktail as much as I did. Cheers guys. And yes, keep smiling.